Good morning, children. I hope you all are well, taking care of yourself. Dear students, we have completed first chapter of our biology, the fundamental unit of life. So today we are going to discuss NCERT in-text questions and their answer. So our first question is, who discovered cell and how? Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. Robert Hooke cut a thin slice of cork and observed it through a self-designed microscope. So what Robert Hooke observed? He observed honeycomb-like structures, beehive-like structures and called them as cell. Cell is a Latin word which means little room. Now what is a cork? Cork is a substance which comes from the bark of a tree. So the answer of the first question is given in the first paragraph of our chapter. So what was our question? Our question was, who discovered cell and how? Cell की discovery किसने और कैसे की? So cell was discovered by Robert Hooke. Cell की discovery Robert Hooke ने 1665 में की थी. Robert Hooke cut a thin slice of cork. Now cork is a substance which obtained from bark of the tree. And रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व्ड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हनी भी रहती है. आप सबने देखा होगा वैसे स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने देखे. सो ही कॉल्ड देम एज सेल. सेल इज अ लैटिन वर्ड which means little room. Okay, so that was our first question. You can see who discovered cell and how. Now next question is, why is the cell called the structural and functional unit of life? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की क्यों कहते हैं? बिकॉज सेल इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल यूनिट बिकॉज द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ स्ट्रक्चर. योर बॉडी इज अ स्ट्रक्चर, माई बॉडी इज अ स्ट्रक्चर, the body of a cow or a plant is a structure, and that structure is made up of cell. Cell is the smallest unit of body of any living organism. If we look into our body's smaller parts, then it is cell. So our body, the body of living organism is made up of cell. So cell is known as structural unit, and the functions which are performed by our body, for example digestion of food, gaseous exchange, respiration, breakdown of food to release energy, filtration, okay, all these functions are carried out by cells. So cells are known as functional unit. Cell is called as structural unit because the body of every living organism is made up of cell. इसलिए सेल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी है और बॉडी को हम एक स्ट्रक्चर कहते हैं. ओके, सो सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट. व्हाई सेल इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट? बिकॉज द functions which are performed by living organisms are performed by cells. Okay, now our next question is, next NCERT in text question is, how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेल के अंदर और बाहर कैसे मूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस and gases moves from high concentration to low concentration. So substances like carbon dioxide or oxygen move in and out of the cell by the process of diffusion. What is diffusion? Movement of molecule from high concentration to low concentration. And how does water move in and out of the cell? Water is a liquid, and liquid move by the process of osmosis. Now what is osmosis? Movement of water from its region of higher concentration to its region of lower concentration through a semi-permeable membrane. So the answer is given in the page number 59. You can see here the movement of carbon dioxide is described here, and water also obey the law of diffusion. The movement of water molecule through a selectively permeable membrane is called osmosis. So how does carbon dioxide move? Carbon dioxide move by the process of diffusion. Diffusion is movement of substance from high concentration to low concentration, and water move in and out of the cell by the process of osmosis. Osmosis is movement of water from high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane.
Diffusion does not require any semi-permeable membrane, but osmosis require a semi-permeable membrane. Now our next question is, why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? व्हाट इज द परमिएबल मेम्ब्रेन? मीनिंग ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है विच अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस. अब परमिएबल से पहले वर्ड क्या है? सिलेक्टिवली. तो दैट मीन्स ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्टेड सब्सटेंस को सेल के अंदर और सेल के बाहर मूव करने दे. So plasma membrane is called as selectively permeable membrane because it allow entry and exit of some selected substance. Answer is clear. So our next question is, fill in the gap in the following table illustrating difference between prokaryotic and eukaryotic cell. So some differences are given. Prokaryotic cell size is generally small 1 to 10 micron. Eukaryotic size is generally large. Now in eukaryotic, second point is nuclear region is well defined and surrounded by a nuclear membrane. So what will come in prokaryotic cell? Nuclear region is not well defined and not surrounded by a nuclear membrane, or we call it as nucleoid. So in the prokaryotic cell, your answer will be nuclear region is not well defined and known as nucleoid. Second point क्या आएगा? दोनों prokaryotic और eukaryotic के न्यूक्लियस में डिफरेंस होता है. यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, it is not surrounded by any membrane. It is just suspended in the cytoplasm and we call it as nucleoid. So यहाँ second point में क्या आएगा? Nuclear region is not well defined and known as nucleoid. Now the third point of prokaryotic cell, chromosome single, eukaryotic more than one chromosome. In prokaryotic cell, fourth point is membrane bound cell organelle is absent. तो eukaryotic cell में क्या आ जाएगा बेटा? Membrane bound cell organelle is present. Okay, this question is also clear. Now our next question is, can you name the two cell organelles we have studied that contain their own genetic material? So there are two cell organelles which have their own genetic material, chloroplast and mitochondria. Chloroplast and mitochondria both have their own genetic material. Okay, nucleus is present in the genetic material is present in the chloroplast as well as in the mitochondria. Chloroplast is kitchen of the cell which help in the plants during the photosynthesis. Chloroplast contain chlorophyll. With the help of chlorophyll, plants are able to absorb sunlight. Okay, so food is prepared in the chloroplast in the plant. So chloroplast is known as kitchen of the cell. Okay, chloroplasts are absent in animals. Chloroplasts are only present in plants. Plants are green in color because they contain chlorophyll pigment. Where is chlorophyll present? Chlorophyll is present in the chloroplast. Mitochondria is powerhouse of the cell because the food which we eat is broken down into simpler parts by our digestive system, and blood will take that digested food and distribute to each and every cell. Now each and every cell will break that digested food into simpler form. So breakdown of glucose takes place in the mitochondria. So mitochondria is known as powerhouse of the cell because breakdown of glucose will release energy. So what was our question? हमारा क्वेश्चन था आपको दो सेल ऑर्गेनलीज के नाम बताने जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल से मतलब है डीएनए. So chloroplast or mitochondria is the answer of this question. They have their own genetic material. That is why they are also known as semi-autonomous cell organelle because they can multiply themselves. They have their own ribosomes, so they can synthesize their own protein. Now next question is, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen?
अगर किसी रीज़न की वजह से सेल की फिजिकल और किसी भी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से सेल की ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं, आपका जो घर है वो एक बिल्डिंग है, अगर वो बिल्डिंग जो है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या होगा। तो जो वो पर्पस सर्व कर रही है कि आप लोग उस बिल्डिंग के अंदर प्रोटेक्टेड है, आप वहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आप प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, आप वहाँ पे रह नहीं पाएंगे। द सेम वे सेल की ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और उसकी साइटोप्लाज्म, और किसी भी रीज़न की वजह से अगर उसकी ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई, अगर उसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो वो सेल डेड हो जाएगा। इट विल नो मोर बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। Lysosomes contain powerful digestive enzymes. They contain hydrolytic enzymes. So whenever any type of metabolic disturbance takes place in the cell, or if we consider 60% part of the cell is damaged, so at that time lysosomes burst and kill their own cell. So that is why they are known as suicidal bag of the cell. So this answer is given in the page number 64 in your NCERT textbook. You can see lysosomes contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material during the disturbance in sorry, you can see in the second last line, during the disturbance in cellular metabolism, when the cell get damaged, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell. लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं कि सेलुलर डिस्टर्बेंस के टाइम पे या किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे लाइसोसोम जिस सेल के अंदर प्रेजेंट थे उन्होंने उसी सेल को किल कर दिया। और किल कैसे किया, लाइसोसोम्स बर्स्ट हो गए और लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट थे उन एंजाइम की हेल्प से वो जो सेल है वो भी डेड हो गया। अब इमरजेंसी की सिचुएशन कौन सी थी कि इमरजेंसी की सिचुएशन अगर हम कंसीडर करें, बेटा मान लीजिए बैक्टीरियल वायरल अटैक हो गया है, बैक्टीरियल वायरल अटैक सेल के ऊपर हो गया और दूसरे सेल्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उस बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए भी लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाएंगे। या सेल का 60-70% पार्ट जो है वो डेड हो गया, अब उस कंडीशन में वो सेल ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा और वो वेस्ट है आपके बॉडी के लिए, तो उस टाइम पे भी जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जाएगा और जिस सेल के अंदर वो प्रेजेंट था उस सेल को वो किल कर देगा, इसलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज where are proteins synthesized inside the cell? Proteins are synthesized by ribosomes. Ribosomes are the protein factory of the cell. Ribosome is the cell organelle which is not surrounded by any membrane. Ribosomes के ऊपर किसी तरीके की कोई membrane नहीं है. Ribosomes are present in prokaryotic as well as in eukaryotic cell. और राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, राइबोसोम्स ही हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। So in this video we have completed our NCERT in-text questions. So in our next video we will discuss about our chapter and exercise. Study well beta, take care of yourself. Thank you.